हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटिस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होगा अगर आप कैट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आपका अभी तक IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू नहीं हुआ है। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट्स 2021। प्लेसमेंट सीजन कल से चालू हुआ है IIM अहमदाबाद में। द प्लेसमेंट किक स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे, दैट्स March 3rd 2021। एक्चुअली इट इज सरप्राइजिंगली गुड बिकॉज थोड़ा पैंडेमिक की वजह से लग रहा था कि शायद से थोड़ा सा काइंड ऑफ अप एंड डाउन हो सकता है, बट आई थिंक द सीजन स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। बेसिकली IIM अहमदाबाद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा जो प्लेसमेंट के बारे में रिलेटेड है। पहली बात तो IIM अहमदाबाद का जो प्लेसमेंट है वो टिपिकल वे में नहीं चलता, क्लस्टर में चलता है। क्लस्टर में बेसिकली एक क्लस्टर है जहां पे बहुत सारी डोमेन्स या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज की कंपनीज को चांस दिया जाता है। सो क्लस्टर 1 जो है, जो मेरा फेवरेट है और जो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है IIM अहमदाबाद में, बिकॉज ये जो क्लस्टर 1 होता है इट इज फिल्ड विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एडवाइजरी, asset management, venture capital, investment banking and markets. अब investment banking और market में क्या फर्क है? See, your IB can be, your mergers and acquisition, IPO, it can be, valuation, something like that, equity research analysis. Your markets is predominantly going to be on the trading front, right? So these are the profiles that are offered cluster 1. So yesterday was a cluster 1 and the students got amazing offers. BCG, to my surprise, has made the highest number of offers this time. That's around about 32. Over and above McKinsey, that's around about 30 in the first cluster. So, if you look at consulting firms and management consulting, by the way, they have made the maximum offers, followed by the BFSI sector, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. And you know what? These are the companies जो यहाँ पे आती है. 80% of the companies are actually Fortune 500 companies in the world. I am little surprised because अगर आप देखोगे यहाँ पे रेगुलर रिक्रूटर्स के बारे में ब्लूमबर्ग ने कहा है, Accenture, MX, Arthur Little, Aventis, Bain & Co. I get it, but थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि यार यहाँ पे JPMC and Deutsche is missing. But I mean, keeping that thing aside, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेगुलर रिक्रूटर्स है IIM अहमदाबाद के कैंपस के ऊपर. Now इस बारी बेन एंड कंपनी ने थोड़ा सा मेरे ख्याल से I don't know why, but then BCG is leading. जहां तक सवाल है समर में बेन एंड कंपनी वाज लीडिंग एज फार एज द हायरिंग इज कंसर्न्ड. सो दिस इज द डोमेन जहां पे मैक्सिमम पे पैकेजेस भी होते हैं, मैक्सिमम कल्ट प्रोफाइल्स भी आती है. एट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्लस्टर 1. क्लस्टर 1 में अगर आप प्लेसमेंट हो जाती है, लाइफ है तुम्हारी. ये चलेगा मेरे ख्याल से 8th of March तक चलना चाहिए. I had a word with some of the students in IIMA. So, they are glad, but March, let me just read this out. Next cluster is tomorrow, that's March 5th, that's okay. March 8th, fantastic. And यहाँ पे एक चीज होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, that's called as ड्रीम एप्लीकेशन. ड्रीम एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ये चीज है कि मान लो अगर आप क्लस्टर 1 में सिलेक्ट हो गए, मान लो आपको लेट्स से आपको बेन एंड कंपनी ने उठा लिया, मैकेंसी ने उठा लिया. मोस्टली अगर आप यहाँ पे चलते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है, बट लेट्स से इफ यू आर गेटिंग इनटू अ कंपनी XYZ कंपनी और मान लो तुम्हारी कोई ड्रीम कंपनी है, वो भी कैंपस पे आती है, या फिर तुम्हारी कोई ड्रीम प्रोफाइल है जो कैंपस पे ऑफर होने वाला है बाय सम अदर कंपनी, तो भले आपका प्लेसमेंट हुआ है एक कंपनी में IIM अहमदाबाद के, बट स्टिल आप वो दूसरी कंपनी को बैठ सकते हो प्लेसमेंट के लिए. आप सिलेक्ट हो गए तो आप वो ऑफर ले सकते भी हो. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स कॉल्ड एज ड्रीम एप्लीकेशन. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मेरे ख्याल से 8 मार्च के पहले ड्रीम एप्लीकेशन भी कवर हो जाएगा. सो नॉर्मल प्लेसमेंट भी चलती है साइड बाय साइड एंड तुम्हारा ड्रीम एप्लीकेशन भी चलता है साइड बाय साइड. बहुत सारे बच्चे तो अप्लाई नहीं करते ड्रीम एप्लीकेशन के लिए, बट यू ऑलवेज हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर ड्रीम एप्लीकेशन. डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर मार्केट्स में चलते हो या फिर अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में चलते हो, दीज आर द ड्रीम प्रोफाइल्स फॉर एवरीबॉडी आउट देयर. सो IIM अहमदाबाद हैज स्टार्टेड विद दिस. By 8th या फिर 9th of the March, we should be getting to know the numbers. I know the numbers, but I won't be disclosing them. Right? So the numbers are going to be good. I'm very sure about it. So let's wait for the final placement report. But यार ये चीजें होती है जब आप एक ब्रांड में चलते हो ना, पैंडेमिक हो, इकोनॉमिक फकअप हो, कुछ भी हो जाए, you definitely get placed. थोड़ा सा पैकेज 19-20 हो जाता है. I mean that's okay, because even company has to do manage their financials and funds. But that's okay. But it is not going to be drastically down. So it might be a change of maybe a lakh or 2 lakh rupees, but nothing more than that. So guys, I hope this video helps you, this video motivates you. Imagine the companies that you're getting into. Imagine the kind of a treatment that you are actually getting from these top-notch B schools. I'll keep you guys posting about all these kind of profiles and colleges and kaise karna hai. Kindly subscribe to my channel and stay tuned to City Mentors. Thank you so much guys. Bye-bye.